Okay. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Imran, and today I will be presenting two very different topics, and these can be important, but actually least discussed during the training and at our workstation. So, first one is anesthesia at remote location, and the other one will be enhanced recovery after surgery. So, just giving the brief introduction and discuss some important topics in these. So, first of all, we will be discussing anesthesia at remote location, that is also known as non-operating room anesthesia, or we can call it anesthesia at remote location, even outpatient anesthesia, or even we can say that this is office-based anesthesia. What are the places that we need non-operating room anesthesia, uh, like radiology suites in cardiac angiography, interventional radiology, CT scan, and MRI, for gastroenterology, endoscopy, for dental and in burn unit, and ECT for the psychiatric, and for gynecology, in vitro fertilization. Actually, what are the problems? What are the concerns when we go for non-operating room anesthesia? Actually, this is the type of anesthesia that we are not giving in our normal operation theater. It is away from the routine, operation theaters. So we can face some problems. What kind of problems that we face? First can be the limited working place and limited access to the patient. Other one can be the electrical interference with monitors, phones, lightning, and temperature. Maybe it is about MRI, and inadequacy or outdated old equipment. Staff can be very, unfamiliar with the anesthesia equipment, and even the personals can be, unskilled. And there is also no regular checkup of anesthesia inventory over there, and even the backup, support is also not available, or if they are available, they are far away from that, non-operating room place. And what are our aims? What we want, when we are at the non-operating room and anesthesia. First of all, patient safety and welfare is our concern, and minimum discomfort and pain. We have to control the anxiety to minimize psychological trauma and maximize the potential for amnesia. And we have to control the movements to complete the procedure, and then recover the patient in a state in which safe discharge from medical supervisory is possible. So these were our targets. What are some considerations when we are in the um, away from our normal operation theater? These can be the same as we are in our normal suits. Like what can be our concerns? You know, like for the anaphylaxis due to the dyes used in different surgeries like in MRI, and for this we should have all the immediate treatment available for the anaphylaxis. And in radiology suits, there will be a radiation exposure, so we have to be prepared for the our protection. And uh, so the other can be the intermittent check whether your syringe is running, or adequate amount of drug is remaining. So anaphylaxis and radiation exposures, these are very important concerns. And what challenges do we have?
with the patients. The reason for which they require the intervention, what was the reason, and what are the, comorbidities of these patients, what can be the fasting status, as we are not sure, as these can be the day case surgeries, and we have to go for the quick airway assessment. And if we have to go for intubation, it can be an unanticipated difficult airway, and dentures can be there. Children's, are very challenging, and anxious patients. And in MRI, there is a claustrophobia, and we can have elderly confused patients, and the patients requiring blood dressings. What challenges we can have with the equipment? We have to make sure that we should check, our routine safety measures, that we have oxygen failure alarm, and make sure that we can see the anesthetic machine, because when we are doing MRI, we are very far away from the, patient. So, uh, and it is the our responsibility to check all these things, ensure that we have rapid communication to colleagues in the main operation theater, because we are not away from the operation theater, so we should have communication with them, and we should check consent. And as we already mentioned, these are poorly equipped places, like in burn dressing or muscle biopsies. Like in MRI, we need long circuits and MRI compatible monitors. We will discuss all this when we go for MRI discussion. And MBAG should also be available to provide positive pressure ventilation. And there are many procedures that we carry out in the dark rooms, like in interventional radiology or endoscopy. These are performed in the dark rooms, so we should be able to visualize the flow meters, and also we should know the accurate gas flow. As ASA one always say that we should be very vigilant anesthetists about the oxygen delivery and ETT disconnection. Positioning can be very, problem for us, like in ERCP, endoscopy, CT guided biopsies. We have to go for prone or lateral positions, and it means that if patient gets sick and we need resuscitation, so prone positions become very difficult for us. So it says that if there is a patient that collapse, we have to go for resuscitation. We have to immediately reposition the patient, and we are also unsure of the duration of the procedure, because we don't know how long it will take. They can finish very quickly, or they can take even long time. So we have to be very vigilant, and we have to avoid long acting muscle relaxants, and we have to be have close communication with the personnel performing the procedure. So we should know the duration of the procedure. What can be the post procedure care? Transport is important to a standard recovery room with the monitors along with the anesthesiologist. Oxygen. Patient who requires elective post-operative ventilation must be transferred with continuous monitoring. Many times we need post-operative ventilation. Patients undergoing aneurysm coiling may need to be ventilated in post-operative period. That means that we have to shift this patient. So we should also communicate with our the senior personnel in the operation theater, and also with the ICU personnel, that maybe we can need any bed. What can be the anesthetic technique? Like it can be only monitoring only. It means we don't need any anesthesiologist, or we need sedation, we need regional anesthesia, or we need TIVA, like in EVA or endovascular aneurysm repair, we need regional anesthesia, we prefer. And for oocyte retrieval, we need TIVA.
in vitro fertilization, TVR, and for interventional neuroradiology or MRI, we need general anesthesia. And the most important thing is whatever we are doing, wherever we are doing, documentation is most important. And what are the ASA guidelines for NORA patients? This is very important slide. Actually, this summarizes all the things that we have discussed. Number one, we should have reliable oxygen source, including a backup supply, adequate and reliable suction. This is also the commonly asked question. Adequate and reliable screening system. They ask that what equipment we don't have, what problems we can face in the NORA patients. So number four, we should have self-inflating resuscitation bag capable of delivering an inspired oxygen fraction of 90%. We should have adequate drugs even for the anaphylaxis. We should have any adequate monitoring, uh, you know, and we should have sufficient electrical outlets, and we should have sufficient space for equipment like our anesthesia machine and for personnel, and we should have immediate emergency card available, even the defibrillator or emergency drugs. We should have a reliable two-way communication mean with the main operation theater or with the ICU, and yes sir, observation of all applicable buildings and safety codes and facility standards, and we should have appropriate post anesthesia management plan as we discussed for the ICU shifting or to the recovery room wherever we need. So we should have plan. And what will be our discharge criteria? Cardiovascular function and airway patency are satisfactory and stable. The patient is easily arousable and protective reflexes are intact. The patient can talk, the patient can sit up unaided. For a very young or handicapped child incapable of the usually expected responses, the pre-sedation level of responses are level as close as possible to the normal level for that child should be achieved. The state of hydration is inadequate. When we meet all these criteria, we can discharge the patient. So now we came to the most important thing. What are this is actually we can say the NORA, non-operating room anesthesia. So what are the concerns when we go for MRI? So how does this work and what problems we can face? This is a high magnetic field and we don't know the duration. It can take 30 minutes to hours, 1 hour, 2 hours, and we need specialized compatible equipment, and there is a lot of radio frequency noise. We can have issues with the implants, you know, and implanted devices in the patients like implanted pacemakers or ICDs or even pulmonary artery catheters. So if we have these and these are not compatible with the MRI, we cannot, have MRI. It says that we should never take any ferrous metal into the MRI suite. Includes laryngoscopes, Caesars, stethoscope, and even mobile phones. Maybe many of us we can forget that we will have mobile phone in our phone. So maybe we will be unable to use that mobile then that time. Somebody else will ring the phone and they will call, for help. In an emergency, take the patient out of. This is very important thing. It says in an emergency, take the patient out of the MRI room. Do not take emergency equipment to the patient because those equipments will not be compatible with the MRI. So take the patient to the out of the MRI room and don't bring. And here is also very important concept. It is not related with the NORA, but this is quench hypoxia when we suddenly stop the MRI. So helium came out, so the pressure increases. Even we are unable to open the doors. So what we can do, even we can broke the mirrors. So there should be no hypoxia. And as I said that there is a very high noise, so we can keep noise blockers in patient ears.
It says in MRI center, anesthesia is induced outside the MRI room and the patient is transferred to the MRI compatible machine in the room. Slave monitors must always be kept outside the MRI. That's what I say that we need long connections. We have different equipments from, and we should be vigilant for the disconnection, or even if the everything is going fine, monitors are attached, or for these monitors we can see the respiratory tracing, enteral CO2, heart rate, and BP. I mean, this is the basics. Monitors we need everywhere. And in MRI we use contrast media, so because of this we can have allergic reaction. We discuss about anaphylaxis, and we discuss also trolley and emergency equipment, emergency drugs. So we should take the history of the allergy and what can be the symptoms and what can be the treatment. Like we have to give the steroids, oxygen, epinephrine can be the treatment, or beta 2 agonist for prevention. Treatment we can also give corticosteroid for the treatment, and we can also give for the prevention if the patient is having history of allergy. So this was about MRI. So we have discussed about the compatibility, the problems what we can have, and also um, the contrast, allergic reaction. So for city, we don't have any major concern. It is less complex. We can use standard monitoring. We don't need any special monitoring or machine. Yes, what is our concern over here? Our concern is the radiation exposure and patient transfer shifting, so disconnection and all those things. But the important thing is radiation exposure. In MRI, issue was the compatibility. In CT, issue is the radiation exposure. This is also very important, and I think this is less commonly performed procedure, but it is important because this procedure has many complications. So we should know the concerns about this. And why we use this? We use to treat major depression. And how it works. Actually, by electroconvulsive therapy, we induce seizures, right? And they should be very short time, 30 to 60 seconds. It says that ECT is performed twice weekly until there is lack of further improvement. And this is general thing. What are the physiological effects? A grand mal seizure tonic phase 10 to 15 and clonic phase 30 to 50 seconds. So it means about 60 to 110 or 120 seconds, 1 to 2 minutes, right? We will have grand mal seizure and what type of phase? Tonic phase. For how long? 10 to 15 seconds. And tonic will be for 10 to 15 and clonic will be 10 to 30 to 50 seconds. So this is the type of seizure that we induce, physiological effect we achieve from this. And what happens with this thing when we induce, when we go for ECT? This was the physiological effect that we get from this, and this is the, you can say, the side effect. First reaction, what happens? Patient goes into the bradycardia, right? Parasympathetic discharge, and it will last for 10 to 15 seconds. So we should not worry about this. But if it goes into brady, we should have atropine in our hand, but it will last for 10 to 15 seconds. So this will result in bradycardia, hypotension, or even asystole. After this, what will happen? First, we get 10 to 15 seconds, about 1 minute, we get physiological effect, and for 10 to 15 seconds, we get parasympathetic response, and after that, we get hypertension and arrhythmias and tachyarrhythmias, and that will last for 5 to 10 minutes. And what will happen with this? This will increase the demand of oxygen, and that can lead to MI. So first
There was bradycardia. Now this patient goes into MI. Or this patient can also go into the left ventricle systolic and diastolic function can remain decreased up to 6 hours after ACT. So we have to be very careful. And what else can these patients have? They can have increased ICP, intraocular and intragastric pressure. To see these complications of this ECT. So our senior will tell us about this. So what I have learned, maybe these complications are important. So what are the ECT goals? Amnesia and rapid recovery. We have to prevent the damage because when we get seizures, they many times they can break their teeth. So we have to control the hemodynamic like bradycardia and tachycardia, and we have to avoid with the initiation and duration of induced seizure because we induce seizure over here. So we should not interfere with this. And it says we should not use sedative pre-medication for this. And this can be the complication. It shows that patient should be encouraged to empty the bladder because incontinence is common. Monitoring should be standard. Place rolled gauze pad. I told you because of the complications. So objective the same, rapid onset and offset of both unconsciousness and relaxation. We can use everything except ketamine. I will ask why we can't use ketamine, and our senior will also tell us why we can't use ketamine. So, whichever drug is used, it is preferable to utilize the same one throughout a course of treatment to avoid interfering with seizure threshold. This is a very important thing because every drug has different seizure threshold. So, when we will use one drug throughout procedure, then we can, you know, we will have an idea about the seizure threshold. Because seizure threshold increase over a course of ECT. Drugs we can use succinylcholine, glycopyrrolate. Why we can use glycopyrrolate? Because of the secretions and also less post ECT tachycardia. So glycopyrrolate is very important. And routine atropine pre-medication is not recommended. So patient goes in bradycardia, but we will not do routine pre-medication. And if we are having sympathetic effect, we can control with that atenolol or labetalol. So what anesthetic technique we use for the ECT intubation? We don't use. We use hyperventilation to lower the seizure threshold because we have to induce seizure. As I told you, bite block. We use bite block to prevent teeth, lips, tongue. During initial treatment, the seizure stimulus magnitude will be may be titrated until an adequate seizure is generated. What we are doing, we are generating seizure. In such circumstances, further boluses of induction agents are required to maintain anesthesia. What can be the adverse effect? Patient can have confusion, agitation, violent behavior, amnesia, headache, myalgia, nausea, vomiting. Patient can have emergent agitation, so we can use midazolam. And we should have a trained person with them because we have to reassure the patient. And patient can have arrhythmias, myocardial infarction, laryngospasm, aspiration, ischemic, TIA, intracranial hemorrhage, even cortical blindness, status epilepticus, disorientation, impaired attention, and even they can have memory problems. So this was about the ECT. Now we go for the neuroradiology. So what procedures we perform in neuroradiology? For cerebral aneurysm, AV fistula, vascular tumor, we use endovascular embolization.
Our goals are to keep the hemodynamic stable and rapid recovery. Over here, we have to avoid hypertension and we have to monitor anticoagulation and complications include what can be the complication over here: rupture aneurysm, bleeding. The first one was the endovascular embolization in neuroradiology procedure. Other is the embolization of control epistaxis. Third procedure, we perform balloon occlusion test. Fourth, cerebral and spinal angiography. These are the procedures that we perform in neuroradiology. It means that we need NORA for these procedures. For in urology, what are our concerns? Uh, these patients can have the pain. They are the claustrophobia. We don't need GA for these. We use spinal epidural. We can use NSAIDs, paracetamol, or even fentanyl, or even we can apply the EMLA cream. We have to mobilize the operating table, so we should, ensure in the operating room position we can assess the patient in case of emergency. It is for all the procedures. If patient is for the gastroenterology, if we need for endoscopy and ERCP. What are our concerns? Hemodynamic instability because of the old age, dehydration, and vagal response due to the gastrointestinal distension. These patients have high risk of aspiration and they can have the difficult airway access due to the first one is the this is very important shared airway in upper endoscopy and prone positioning and dark procedure. So these are very important and hemodynamic instability and aspiration. Other where we need NURA in we need in vascular thoracic gastroenterology as we have discussed and in cyclone therapy and radiation therapy and brachytherapy. Now this is our second topic, enhanced recovery after surgery. We call this ERAS protocol. This is very simple topic. I will just quickly go through it. Few slides left, inshallah. What is ERAS and ERPS? I think both are same. It is also known as fast track surgery and it is a multimodal perioperative care. What is that? Multimodal perioperative care to reduce the stress response and acceleration of recovery. This is our target. Reduce stress response and recover the patient and send him back to home. Why we need ERAS? Because 30 to 40% reduction in length of hospital stay. There is reduction of nosocomial infection and the patient return to work early and it is cost effective 30 to 40% fall in healthcare cost. And this also result in early discharge, so then we can have more turnover of the patients. Goals: reduction of stress response, acceleration of recovery. Usually hospital stay is 7 to 14 days. With this we can go for 2 to 3 days. How this work? If you see over here, this is preoperative, operative, post-operative time period. This shows the functional status recovery of the patient. If we see with the RAS functional status of the patient recovers early. If we don't follow the RAS, it takes more time. Over here you can see functional capacity is within days with the RAS, and with traditional care it takes weeks. So this will increase the burden on the hospital and infection and all those.
What is the team member of the successful, enhanced recovery program? Nurses, dietitian, physiotherapist, occupational therapist, pain team, theatre staff, anesthesiologist, hospital management, and audit. So it is pre-operative, intraoperative, and post-operative. So this is a big team. What are the key components? This is the only important slide. Next, we will not discuss more. If you see how we have to apply this ERAS, so what we are doing here is the active patient involvement. In preoperative, what we can do in intraoperative and postoperative. Preoperative, what we have to discuss, we have to educate the patient about everything, about the procedure, about the complication, about how he can, mobilize himself, how he can encourage him to do exercise, how he can, so I will go through this. Preoperative, pre-admission education, early discharge planning. We have to tell that patient. We have to reduce the time for fasting. We have to load with the carbohydrate food. And now we don't have to select to prepare our bowel for the surgery, and we have to give the venous thromboprophylaxis. We have to give antibiotic prophylaxis, and we have to keep the patient pre-warm. Intraoperative active warming, we don't have to use opioid. We can use opioid sparing technique, and we have to go for minimal invasive surgery, and we have to avoid all these NG tubes and drain intraoperative, and we have to go for the goal directed treatment that was called goal directed fluid therapy. We have to control the pain and nausea. These two are the major concerns that lead to delayed discharge of the patient. Post-operative, what are the we have to give early nutrition. We have to remove all the catheters. We have to early mobilize. We can give him the chewing gum to increase his bowel movements, and we can educate him about the discharge, and we have to do the audit. And so this is a whole team involvement that we have discussed this team. So what is pre-admission? We have to optimize, we have to consult, we have to give oral supplement. In anesthesia, normothermia, we can go for epidural, and we have to avoid fluid overload. That we have to go for fluid goal directed fluid therapy. Preoperative, patient should come in hospital at the day of surgery. We have to educate about fasting and carbohydrate loading, as I have discussed all these things. For surgery, we have to go for laparoscopy, short incision, transverse incision, and we have to avoid all these things. Post-operative hydration, multimodal pain control. We have to aggressive management of nausea and vomiting. We have to early mobilization and feeding of the patient and discharge. So this is what we have discussed. Now I will go through all these slides. Pre-admission counseling, as I told you that we have to discuss about everything, about the procedure, about the food, about nutrition, mobilization. So selective bowel preparation is not adequate uh, advisable now. If patient is taking solid food, he can fast for 6 hours for clear food. Now he can fast only for 2 hours. The same thing. Preoperative carbohydrate loading and metabolic conditioning. Now it is said that we should load the patient with the carbohydrate load. We should not keep the patient for too long, fasted for many hours now. For 2 to 3 hours now, we can fast the patient with the carbohydrate loading. So, as I discussed, we should avoid all these tubes and all these things. Epidural, short-acting anesthesia, we can go for TVA and goal-directed fluid therapy. We should avoid hypothermia because it increases the risk of wound infection, bleeding, and transfusion risk. So this will delay the discharge of the patient. We have to give small incisions, and we have to avoid
drains. We should remove all the drains. Uh, we should try to remove all the drains in 24 hours. We should be very vigilant about nausea and vomiting. We should early mobilize the patient and early mobilize the food intake, and we should also stop the intravenous drips early. We should early mobilize the patient because it increases insulin resistance and decreases muscle strength. So on the day of the surgery, 0 day, we should ask the patient to out of the bed for 2 hours and for 6 hours a day until discharge. So at even on the day of surgery, we can ask the patient out of bed for 2 hours. Um, we should avoid NSAIDs and we should avoid opioids. We can give NSAIDs. This is what we have discussed. On the day of surgery, first post-operative day, we should remove urinary catheter. We should encourage for the nutrition for 2000 ml oral fluids, and we have to stop IV fluids. We should give oral fluids 4 times protein intake, and pain control and education for the stomach care. Second post-operative day, we should stop epidural, and the same for the nutrition. We should increase mobilization to the 4 times a day and out of bed for 8 hours a day, and we should educate the patient about the stomach care and early discharge. And on third day, same pain control with the paracetamol, nutrition, and the 2000 ml fluids and 4 high protein drinks, and educate the patient for the discharge. What is discharge criteria? When patient has good pain control with oral analgesia, taking solid food, no intravenous fluid, independently mobilized, are same level as prior to admission. When these criteria met, we can discharge the patient. What problems we are having? We are having problems because of the institutional behavior. We don't have nursing staff and financial resources. We have lack of communication and collaboration with the team, and the surgeons are not willing to change their practice. So these are the difficulties in implementing ERAs. Thank you all. Yes, sir. Thank you so much, Dr. Imran. Very detailed and comprehensive presentation on this topic. The topic was quite lengthy, and Yes, we sir. tried to cover it in a fixed time. But now we have a time to discuss these topics, and if any one of us have any comment to share with. Yes, sir. I'm so sorry. I was really tired. You can, understand my voice. I was very much tired. That's why I was a little bit lazy. Okay, it's Yes, sir. appreciable on your side. Thank you, sir. Yes, Dr. Zishan, you want to share anything? जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक तो ये कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया था शुरू में। मैं 15-20 मिनट के बाद ज्वाइन किया था, तो 2-4 बातें मैं करना चाहूँगा। एक तो जनरली ये है कि कई दफ़ा प्रेजेंटेशन में इतने लंबे टॉपिक को कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इन्होंने बहरहाल बहुत अच्छी तरीके से कवर करने की कोशिश की है। तो एक तो मैं फिर वही बात मैंने लास्ट टाइम भी एक रिपीट की थी, वो अभी भी मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि जो यहाँ पर वो लोग के जो अब बुजुर्ग हो गए ना हमारी तरह, जो अब जिन्होंने इम्तहान नहीं देना, तो वो तो कुछ भी बोल सकते हैं और कुछ भी सुन सकते हैं, उनको कोई अब पकड़ने वाला नहीं है। लेकिन जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं ना, उनको ये अपने जहन में रखनी चाहिए कि यहाँ पर प्रेजेंटेशन में अगर कोई भी बात कही जा रही है, उसको आप क्लोज्ड एंडेड जुमलों के तहत ना समझें, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे भी मैं एग्जांपल दूंगा कि इन्होंने यहाँ पे कहा कि ओपियाइड शुड बी अवॉइडेड, तो ये शुड बी अवॉइडेड ठीक है, ये प्रेजेंटेशन के लिए तो ये बात ठीक है, लेकिन एग्जाम के अंदर ये इस तरह से सवाल नहीं आएगा, ठीक है ना।
तो वहां पर आपको ये ध्यान में रखना है कि ये इस तरह का ये कोई एब्सोल्यूट चीज नहीं है इसके अंदर। वहां पर आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि ऐसे ओपियाइड्स के जिनका बहुत ज्यादा हैंगओवर ना हो, ठीक है, वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये मेरा कमेंट है। और दूसरी बात ये कि कोशिश ये होनी चाहिए कि यहाँ पे हमारी के इस प्रेजेंटेशन में कुछ एग्जाम ओरिएंटेड जो एमसीक्यूज की बातों को भी ना वहां पर हाईलाइट कर दिया जाए, ठीक है। जैसे मतलब ये एमआरआई के रेफरेंस से एक दो टर्मिनोलॉजीज हैं वो आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि उसकी बेस पे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक एमआरआई सेफ होता है, एक एमआरआई अनसेफ होता है, एक एमआरआई कंडीशनल होता है। तो ये आप इसके बारे में मैं अभी क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लोर करके मैं आप लोगों को कुछ चीजें और भेज दूंगा, तो वो आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा उसमें। दूसरे ये इसी तरीके से ये इन्होंने बताया था कंट्रास्ट रिलेटेड ना, तो वो उसके अंदर स्लाइड पे मैंने गौर किया था। तो वहां पर क्योंकि एनाफाइलैक्सिस के रेफरेंस से ना वहां पर एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन आता है, तो वहां पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मैं तो अक्सर लोगों से बात होती रहती है। तो वहां पर सबसे जो पहली एनाफाइलैक्सिस के लिए है वो ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो एपिनेफ्रीन है, ठीक है। तो ये प्रेजेंटेशन में भी हमें इस चीज को जरा सा हाईलाइट कर देना चाहिए ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज ना हो, क्योंकि वहां पे सारी चीजें लिखी होती हैं, तो वहां पर फिर उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। इसी तरीके से ईसीटी के अंदर जो इन्होंने बातें की थी, तो उसके अंदर जो एमसीक्यू के अंदर ना वो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक के बारे में एमसीक्यू आता है। तो वो उसके अंदर पहले कौन सा आता है, और उसके अंदर वो क्वेश्चन यही पूछने उन्होंने बता दिया था। मेरे ख्याल से पैरासिम्पैथेटिक के बारे में उन्होंने जिक्र किया था, सिंपैथेटिक के बारे में उन्होंने जिक्र नहीं किया था। तो वो सिंपैथेटिक के बारे में भी आप थोड़ा सा पॉइंट्स आप को पता होना चाहिए कि वो अगर सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स आता है तो आप शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, या अगर बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन हो गई है तो आप उसमें वेजोडाइलेटर जैसे लेबिटालॉल या कोई ऐसी आप मेडिसिन, क्योंकि वहां पर ये इस तरह का ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। ईसीटी के रेफरेंस से एक दो बातें और भी मेरे दिमाग में आई थी, वो ये है, एक तो बात ये कि इंडक्शन एजेंट ऑफ चॉइस कौन सा होगा। तो इंडक्शन एजेंट ऑफ चॉइस कौन सा आपने अवॉइड करना है। तो आपने कैटामीन का जिक्र किया था, वहां पर आपने थायोपेंटोन का जिक्र नहीं किया, क्योंकि थायोपेंटोन भी इसके लिए इतना अच्छा एजेंट इसलिए नहीं है क्योंकि थायोपेंटोन जो है वो एक्चुअली एंटी एपिलेप्टिक है, तो उससे उल्टा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो प्रोपोफोल इज अ बेटर एजेंट, नॉट ओनली ये कि इसकी रिकवरी अच्छी होती है, और दूसरे इसकी कुछ स्टडीज में है कि ये सीजर थ्रेशोल्ड को कम करता है। हालांकि ये एंटी एपिलेप्टिक के तौर पे दिया जाता है, लेकिन ये सीजर थ्रेशोल्ड को कम करता है, ठीक है। तो दूसरे इसमें शायद आपने एक चीज नहीं जिक्र किया था, या पता ये शायद मैं मिस कर गया हूँ कि क्योंकि इसमें जब सीजर एक्टिविटी होती है तो उसमें ज्वाइंट्स की डिसलोकेशन और इवन फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। तो वो ज्वाइंट्स को प्रॉपरली आपने उसको पेशेंट को इस तरीके से प्लेस करना है कि उसको ये ज्वाइंट्स की डिसलोकेशन और फ्रैक्चर्स की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर ये है कि यूज ऑफ मसल रिलैक्सेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसके अंदर भी क्योंकि अगर आप सक्सामेथोनियम देते हैं तो जो पैरासिम्पैथेटिक जो पीरियड होता है उसके अंदर प्रॉब्लम एग्जेजरेट होने का खतरा होता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। दूसरे ये कि इंट्यूबेशन के बारे में आपने कहा था कि इंट्यूबेशन जनरली कंसिडर नहीं होती, तो उसके अंदर ऑल्टरनेटिव क्या कुछ चीजें, तो उसमें आप एयरवे भी रख सकते हैं, उसमें आप एलएमए डाल दें। एलएमए डालने का एडवांटेज ये होगा कि वो बेसिकली उससे एयरवे भी सिक्योर पार्शली हो जाएगा, और उससे ये बाइट ब्लॉक यानी कि जो टंग बाइटिंग का और जो टंग क्लेंचिंग का है वो भी सारी चीजें उससे कवर हो जाएंगी। तो ये एक उसके अंदर ऑप्शन है, ठीक है। तो बाकी एंडोस्कोपी के अंदर आपने जो जिक्र किया था ना, तो उसके अंदर जो लोगों को कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो कॉन्शियस सिडेशन, मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया केयर, ठीक है। और उसके अंदर क्योंकि जो इसकी रिकमेंडेड जो टेक्निक है उसके अंदर वो बेसिकली कॉन्शियस सिडेशन करते हैं और पेशेंट को इंट्यूबेट नहीं करते। कुछ लैटरल हाई मतलब आप समझ लें कि सेमी प्रोन सेमी लैटरल पोजीशन में करते हैं या फिर फुल प्रोन में करते हैं। तो उसके अंदर दोनों टेक्निक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारे आमतौर पे इतनी एक्सपर्टी लेवल मैंने तो नहीं देखा, तो वो आमतौर पे हमें इंट्यूबेट ही कर देना चाहिए, लेकिन बेसिकली इंट्यूबेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। तो एंडोस्कोपिक प्रोसीजर के अंदर क्योंकि वो पेशेंट बहुत हाई रिस्क पे पेशेंट होता है, अक्सर उनको या तो जॉइंटस हुआ होता है या वो पोस्ट लिवर ट्रांसप्लांट पेशेंट्स होते हैं, तो वो थोड़ा सा हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं, तो वो उसके अंदर ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। न्यूरो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के बारे में आपने जो बताया था उसके अंदर भी जो न्यूरो एनेस्थीसिया के सारे कंसर्न हैं वो उसके अंदर आपके होंगे, और वो भी एक सॉर्ट ऑफ हाई रिस्क पेशेंट होगा।
तो बस ये है। बाकी है कि टर्म ये क्योंकि वो जो होता है ना उसकी वैल्यूज के ऊपर क्वेश्चन बना सकते हैं एमआरआई के ना, कि एमआरआई सेफ, और मैंने आपको जो बताया है कि उसका कितना वो उसके वो तो कुछ चीजें मुझे भी भूल गई, अब दिमाग में नहीं आ रही। उसका टेस्ला होता है मेरे ख्याल से, कितना टेस्ला होता है, और इस तरह की चीजें वो एमसीक्यू में पूछ सकते हैं ना। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन था सर हमारा वो इसका जी इराज का था, उसको कमेंट कर सकते हैं। आई एम सॉरी। जी सर मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक हमारा इराज का था, उस पर भी कमेंट कर सकते हैं सर। हाँ इरास, सॉरी, मैं वो इरास के बारे में ये देखें कि इरास आपने बहुत अच्छा बताया, बल्कि शायद आपने इरास पे ज्यादा टाइम लगा दिया आई थिंक। तो इरास में ना देखें, एक तो ये कि जो प्रोसीजर्स पे यूज हुआ है इरास, तो उसमें मेनली ऑर्थोपेडिक सर्जरी है, और जो है ना वो जीआई की सर्जरी है, ठीक है। तो ऑर्थोपेडिक के रेफरेंस के अंदर आपने ऐसा रीजनल एनेस्थीसिया देना है कि जिसके अंदर मोटर स्पेयरिंग हो। तो जैसे मिसाल के तौर पे एपिड्यूरल से ज्यादा बेहतर है कि उसको जो है वो बेसिकली जो है नी के लिए अगर है तो एडक्टर कनाल ब्लॉक का बहुत एडवांटेज होता है, क्योंकि एडक्टर कनाल ब्लॉक के अंदर सेफिनस नर्व से ब्लॉक होती है और मोटर स्पेयरिंग होती है और अर्ली मोबिलाइजेशन होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से एपिड्यूरल जो है ना वो प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो इरास के रेफरेंस से ना एपिड्यूरल को डिस्करेज किया जाता है। रीजनल जैसे टैप ब्लॉक है, या और ऐसे ब्लॉक के जिसके या उसमें ऐसी उसमें कंसंट्रेशन के जिसके अंदर मोटर ब्लॉकेट कम से कम हो। तो ये उसमें एक बात थी। बाकी बाकी तकरीबन आपने बहुत अच्छा कवर किया था रास्त, इसलिए मैं शायद उसमें बहुत ज्यादा वो बताने का मार्जिन नहीं था मेरे लिए। तो बाकी बहुत अच्छा था, लेकिन ये है कि ये बहुत एक्सटेंसिव टॉपिक था, और इसके अंदर जो ब्रांचेस है ना वो बहुत सारी हैं। और असल में एक्चुअली एक और प्रॉब्लम ये इस टॉपिक के अंदर ये है कि हमारे बहुत सारे हमारे जो पाकिस्तान के ट्रेनिंग्स हैं उनको उनको इस बारे में क्योंकि एमआरआई में काम करने का मौका नहीं मिलता, बहुत कम सेंटर्स हैं जहां पर ईआरसीपी होती है। बल्कि मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम जब मैंने एफसीपीएस का वाइवा दिया था, तो मेरे से वाइवा में पूछा गया कि व्हाट इज मैक। तो मैंने उनको कहा मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया केयर। तो मेरे उस वक्त 2012 में मेरी इस नॉलेज का ये हाल था कि मुझे इस टर्मिनोलॉजी का भी नहीं पता था कि मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया केयर भी कोई चीज होती है। और फिर उन्होंने मुझसे अगला सवाल पूछा था कि हाउ विल यू गिव एनेस्थीसिया फॉर ईआरसीपी। तो मुझे उस वक्त ईआरसीपी की एब्रीविएशन भी मुझे याद नहीं आई। वो एंडोस्कोपिक के आगे मैं कंफ्यूज हो रहा था कि क्या चीज है। तो एनीवेज मतलब बताने का मकसद ये है कि क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं कि जो आम तौर पे हमारे रेजिडेंट्स को एक्सपोजर नहीं होता, तो इसलिए वो फंस जाते हैं इस टॉपिक में। तो इनको मैं ये कहता हूँ, ये एक फजूल, मैंने जब पढ़ता था तो मैंने इनको मजाकन में इनको कहता था ये फजूल टॉपिक्स की एक लिस्ट है। तो आप लोग ये फजूल टॉपिक्स की एक लिस्ट बनाएं कि ये वो चीजें हों कि जो आप नॉर्मली नहीं करते। तो ये एग्जाम में एक फजूल टॉपिक या दो फजूल टॉपिक वाइवे में भी और एमसीक्यूज में भी इसका पोर्शन आता है। और क्योंकि आप लोगों को इसलिए नॉलेज कम होती है क्योंकि हम करते नहीं है। इसी तरीके से मॉनिटरिंग, सारी मॉनिटरिंग सबको आ जाएगी, लेकिन न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग की जो न्यूरोमस्कुलर मॉनिटरिंग है या ये जो न्यूरो मॉनिटरिंग है उसमें बंदा फंस जाता है, क्योंकि वो कभी करते ही नहीं है। बाकी कुछ ना कुछ किसी ना किसी लेवल पे लोग कर लेते हैं। इवन कार्डिक आउटपुट मॉनिटर भी हमारे पास वो हाई फाई कार्डिक आउटपुट मॉनिटर नहीं है पाकिस्तान में, तो उसकी वजह से वो प्रॉब्लम होती है। तो बेसिकली ये टॉपिक को आप बहुत इंपॉर्टेंस दें। ये कोई बहुत अट्रैक्टिव टॉपिक नहीं है, लेकिन ये बहुत हाई यील्ड टॉपिक है, ठीक है। जी, थैंक यू और सर। किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई कमेंट शेयर करना चाहें? जी डॉक्टर तारिक, डॉक्टर तारिक, सर आपसे कमेंट सर। डॉक्टर तारिक बशीर, अनम्यूट करें सर। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, वेरी वेल कंप्रीहेंसिव, वो सबसे बड़ा टॉपिक था, बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया। तो मेरे फ्यू सिंपल क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनर लव करते हैं आस्क करना। उनमें से ये है कि डॉक्टर इमरान, आप रोस्टर बना रहे हैं, तो आप कौन सी ईयर की पीजी की ड्यूटी लगाना पसंद करेंगे एमआरआई एनेस्थीसिया में? जी, कोई आंसर करना चाहे इस क्वेश्चन को? सर इस पे मतलब जो अब उनका कंसर्न तो यही होगा कि इफ द कैंडिडेट नो अबाउट द concerns about MRI, अगर तो we have trained that PGR or the the resident, then I think
ही कैन गो देयर। अगर जैसे सर बता रहे थे कि जैसे ये स्पेशलिटीज हैं ऐसी के वेरी रेयर हैं, अनकॉमन है, लाइक मुल्तान में या इन इलाकों में तो है ही नहीं MRI कंपेटिबल, सुना है पीड्स के अंदर एक है। तो अगर यही कंसर्न है तो फिर तो अगर उसने ट्रेनिंग की हुई है देन ही कैन गो, इफ ही नॉट फिट नहीं। अगर कोई और ऐसा बता दें। अच्छा इमरान, पूछने का मकसद यही था कि एग्जामिनर जो पूछते हैं तो इसका सिंपल आंसर ये है कि कंसल्टेंट जाएगा, पीजी नहीं जाएगा। दीज जो है ऑफिस बेस्ड एनेस्थीसिया मस्ट बी अंडर द कवर ऑफ द कंसल्टेंट। हाँ करवाते हैं, हम करवाते नहीं, लेकिन जो एग्जाम का आंसर है वो आप यही देंगे कि मस्ट बी अंडर द कवर ऑफ द कंसल्टेंट। क्लियर। और सेकंड जो मॉनिटरिंग के लिए पूछा जाता है कि विच टाइप ऑफ मॉनिटरिंग, विच मतलब मॉनिटर्स पैरामीटर्स कौन कौन से अटैच करेंगे आप? वो तो स्टैंडर्ड बताएं सर अभी। अच्छा सेकंड, मैं अपना का बिल्कुल एग्जाम नहीं ले रहा, आपने ऐसा नहीं समझना, सिर्फ ये चीजें टिपिकल वो है जो नहीं सर, नहीं ऐसी बात नहीं है, नहीं बिल्कुल, ये तो बड़ा अच्छा होता है सर आप लोगों का, हमारे लिए तो जी सर। ये स्टैंडर्ड मॉनिटरिंग, स्टैंडर्ड मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं सर, यानी कि जो है इसके अंदर आप क्या अच्छा तो इसके अंदर सर ECG हमारी आ जाएगी, अनटाइटल्ड CO2 आ जाएगी, हमारी जो है ना सैचुरेशन आ जाएगी। चीज है वो यही है, अनटाइटल्ड CO2 आप लाजमी करेंगे, क्योंकि आपका लैप्स टाइम होता है ऑक्सीजन का, और आपके अंदर आपके पास करने को बहुत कम चीजें होती हैं जब आप आउट ऑफ ऑपरेशन थिएटर होते हैं। तो ये है कि सैचुरेशन आपको तब रीडिंग देगी कम की जब वो मतलब पेशेंट अपने जो 3 to 4 मिनट से 5 मिनट एग्जॉस्ट कर चुका है। तो वाइल CO2 जो है वो आपको फौरन पता चलता है कि पेशेंट एपनिया में, आपने जो एफर्ट करनी है वो करना या डिस्कनेक्ट हो गया जैसा रहती है। तो इसी तरह जो MRI है, MRI के अंदर आपको जोन से लाजमी पता होना चाहिए कि फर्स्ट जोन कौन सा होता है, सेकंड जोन कौन सा होता है, थर्ड जोन कौन सा होता है। और जिस तरह निशान भाई ने कहा टेस्ला वास, आपको लाजमी आने जी। और थर्ड जो मैकेनिज्म है वास का बहुत ज्यादा नहीं पूछते, तो क्योंकि आजकल आपका है भी MCQs, तो वो हमें तो मैकेनिज्म पढ़ना पड़ता था MRI का, तो वो करते किस तरह तो ना तो यूजर। अच्छा, ये इसी के अंदर मैं थोड़ा सा कमेंट करूंगा कि तारिक भाई ने जो बताई है ना बात, वो उसके अंदर मैं सिर्फ ऐड ऑन ये करूंगा कि एक चीज है हमारे मुल्क का प्रैक्टिकल सिस्टम, ठीक है, और दूसरा है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स या एग्जाम स्टैंडर्ड। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से no resident can conduct anesthesia or whatever year till the time he has passed his exam. He cannot conduct anesthesia independently. ठीक है, ये हमारी जो MBBS की भी जो डिग्री है उसमें हम एनेस्थीसिया नहीं दे सकते, हम सिर्फ मेडिसिन, माइनर सर्जरी और ENT और गाइनी ऑप्स कर सकते हैं, हम स्पेशलाइज्ड फील्ड नहीं कर सकते। तो पहली तो बात ये है कि हर सर्जरी अंडर एनेस्थीसिया वो होगी, अंडर कंसल्टेंट कवर, ठीक है। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा बेसिकली वो यही उसी के अंदर एडिशन, यही मैं बात कहूंगा कि इसके अंदर ऐसा रेजिडेंट जिसको तमाम एनेस्थीसिया के एस्पेक्ट्स को कवर कर सकता है, तो तब वो यहाँ पे भी अगर वो आपसे हमारे पाकिस्तान के सेटअप के हिसाब से भी पूछते हैं तो वो जिसकी बैकग्राउंड नॉलेज इतनी हो कि वो इन सारी चीजों को कवर कर सकता है, ठीक है ना? लेकिन ये डिबेटेबल बात हो सकती है, बिकॉज ये अभी रिसेंटली मैं पढ़ रहा था इस बारे में कि अगर आप उनको हर वक्त ही सुपरवाइज करेंगे तो जब उनको आप सर्टिफाइड कर देंगे देन दे विल बी अनएबल टू परफॉर्म ऑल दीज एक्टिविटीज इंडिपेंडेंटली। तो कहा जाता है कि लेट देम परफॉर्म इंडिपेंडेंटली। नहीं, वो आपकी फाइनल ईयर में या कुछ इस तरह से, ताकि दे कैन गेट कॉन्फिडेंस। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन ये आप कहीं किसी भी फोरम पे ये नहीं कह सकते कि विदाउट सुपरविजन जरूरी नहीं है कि वो थिएटर में आपके साथ खड़ा हो, ठीक है। वो सुपरविजन डिस्टेंट हो सकती है, लेकिन ही कैन नॉट परफॉर्म इंडिपेंडेंट एनेस्थीसिया, दैट्स इट, सिंपल एज दैट। ये मतलब ये तो इलीगल, मैं अगर मुझे अपना वक्त याद आता है और हम पाकिस्तान का जो सिस्टम देखता हूं तो वो तो बंदा अपना सर पीट ले। मैंने तो फर्स्ट ईयर रेजिडेंसी में अम्बो बैग पे प्राइवेट प्रैक्टिस यहाँ पे तो फर्स्ट वीक में ही लगा देते हैं पकड़ के, चलो भाई। तो एनीवेज वो असल में ना देखें, ये देखें, ये जो रेजिडेंट्स हैं और ये सवाल नहीं पूछते ना, ये अपने साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं। लेकिन ये क्लास का जो है फोरम, यहाँ पर आप लोगों को अगले वीक के लिए क्वेश्चन पूछने चाहिए, लेकिन यहाँ पर सब लोग कंसल्टेंट्स की तरह आते हैं, खामोशी से चुप करके हु में बैठते हैं, वाह वाह करते हैं, थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन, थैंक यू वेरी मच। दिस इज नॉट फेयर। ये देखें, ये आमिर भाई की जो एफर्ट है, इस एफर्ट का फायदा उस वक्त आप लोगों का होगा कि अगर आप पार्टिसिपेट करें। आप लोग क्यों नहीं सवाल पूछते हैं?
ये तो सबसे बड़ा मेरा क्वेश्चन है कि देखें ये हम कोई वो तो नहीं कर रहे ना, गवर्नमेंट के की तरह हम कोई शो ऑफ तो नहीं कर रहे। मुझे या आमिर भाई को क्या चाहिए, आप मुझे बताएं इस बात का। जो अचीव करना है वो तो हम कर चुके हैं, ठीक है। तो मैं अभी इस वक्त दरवाजा बंद करके कमरे में अपने बच्चों को दूसरे कमरे में बिठा के यहाँ बैठा हुआ हूँ और मैं आप लोगों की हेल्प करना चाह रहा हूँ। या आमिर भाई रात के 11 बजे बैठे हुए, 12 बजे बैठे हुए, तो आप लोगों को ही अगर नहीं होश आ रहा तो मुझे बताएं कि फिर फायदा क्या है इस ग्रुप का, इस क्लास का। उस वक्त फायदा होगा मेरे भाई कि आप लोग एक एक चीज, इच्ची बिच्ची सवाल पूछें, ना डरें। कोई डंडा नहीं मारेगा, खुदा की कसम कोई भी डंडा नहीं मारेगा, आप लोगों का ही फायदा होगा, ठीक है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि जो इस वक्त भी बैठे हुए हैं यहाँ पे या जो बाद में ये प्रेजेंटेशन सुनेंगे, प्लीज डोंट हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चंस, प्लीज आस्क क्वेश्चंस, ठीक है जी। अच्छा, और जी किसी का क्वेश्चन शेयर करना चाहे? बाकी जो उसकी मोटी मोटी समरी थी वो तो डॉक्टर ईशान ने शेयर कर दी कि ये लीस्ट डिस्कस्ड और लीस्ट प्रैक्टिस जो हमारा ये सेगमेंट ऑफ एनेस्थीसिया, तो बहुत कम हमारी ट्रेनिंग फैसिलिटीज हैं जिसके अंदर ये आउट ऑफ ऑपरेशन थिएटर एनेस्थीसिया हम यूज़ करते हैं। तो जहाँ पे करते हैं डेफिनेटली उन लोगों को तो जब भी मौका मिले तो इसको ग्रिप करें, और जिनके पास नहीं है वो एटलीस्ट कोशिश करें कि उन जगहों पे रोटेट कर लें, चाहे एक हफ्ते की रोटेशन क्यों ना हो, थोड़ी सी अवेयरनेस हो जाए। अदरवाइज ये एक चैलेंज होता है, यूँ समझ लें कि ये एक ट्रैप है एनेस्थेटिक्स के लिए। मैं पर्सनली अगर इसको कैटेगराइज करूँ तो शायद ये सबसे मुश्किल एनेस्थीसिया है। ये ऐसे ही है कि आपको जो है ना वो धक्का दे दिया जाए और उसके बाद आपको जाकर पता चले कि मैं गिरा कहाँ पे, खाई में गिरा हूँ, उसमें कांटे हैं नहीं है, तब जाके आपको असेसमेंट होती है कि यहाँ पे मैं पहुंचा कहाँ पे। तो ये आउट ऑफ ऑपरेशन थिएटर इज योर हेवन, जहाँ पे आप इजी फील करते हैं, आपके पास इक्विपमेंट्स हैं, गैजेट्स हैं। व्हेन यू आर आउट ऑफ ऑपरेशन रूम तो यू आर इन ट्रबल। इवन कि आप आईसीयू में भी जब इंटोबेशन करने लगते हैं तो आपको फील होता है कि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू। तो आउट ऑफ ऑपरेशन थिएटर के ये जितने प्रोसीजर हैं, और इनमें बेसिकली टास्क भी यही होता है कि आपने शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थीसिया देना है, पेशेंट को अर्ली मोबिलाइज करना है, वहाँ से मूव करना है। रिकवरी उतनी आपके इक्विप नहीं है, आपके पास मॉनिटरिंग की इतनी फैसिलिटीज नहीं है। तो ये सारी लिमिटेशन है और साथ आपका चैलेंज है कि आपने उसको जो है वो स्टेबल भी रखना है और फौरन भेजना भी है। और ये सर बहुत एक बड़ा रहमान प्रॉब्लम। जान है सर, उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। जी जी रहमान जान है सर, उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। जी जी डॉक्टर रहमान करें क्वेश्चन। जी डॉक्टर रहमान। म्यूट है शायद वो मेरे ख्याल में। उनको अनम्यूट तो कर। जी सर, थैंक यू सर फॉर लेटिंग मी आस्क द क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन सर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के लिहाज से है। उसकी चूंकि हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, वी डोंट नो मच अबाउट दैट, कि उसमें हम इनिशियली क्या करते हैं, कैसे एनेस्थेटिक मैनेजमेंट करते हैं, इसको पहले ही से ही सेडेट करते हैं या बाद में सेकेंड फेज में उसको सेडेट करते हैं सर? जी क्वेश्चन ये आंसर करना चाहिए। देखें जी जी, देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने शायद अपने कैरियर में एक दफा या 2 दफा करवाया होगा, और वो भी रेजिडेंट लेवल पे। आप खुद सोचें, ये इस सवाल का जवाब आप खुद सोचें कि बिजली लगानी है, क्या अब एक पेशेंट को आप बिजली लगाना चाहेंगे? नहीं जी लगाना सर, मैं चाहेंगे ना। तो नहीं चाहूंगा, मैं तो चाहूंगा हाँ कि हाँ हाँ, इनिशियली से इसको बिल्कुल बिल्कुल। डेफिनेटली सर। देखें तो इसमें बेसिकली जो इसके अंदर होता है, इसके अंदर आप उसको सिडेट करेंगे, आप उसको वही जो प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है वो आप लगाएंगे। इंडक्शन एजेंट आपने ऐसा देना है जिसको बहुत ज्यादा ऐसा ना हो कि वो बहुत डीप उसमें प्लेन में चला जाए, ठीक है। मतलब लाइक ये कि आपने उसमें अगर मिसाल के तौर पे आप उसको सिडेशन के, आप उसको किस लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं, आप उसको सिडेशन के, डीप सिडेशन पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर आपने मसल रिलैक्सेंट देना है या आपने उसको एयरवे को डेफिनेटिव मेंटेन करना है, या आप उसको एलएम में डालना चाहते हैं, तो आप वो करके फिर उसके बाद वो उसको देंगे, उसको जो इलेक्ट्रिसिटी देंगे, जो उसकी सीजर एक्टिविटी को जनरेट करेगी।
और उसके बाद फिर वो विद इन फ्यू सेकंड से काम सारा खत्म हो जाएगा और उस विद इन रिवाइव करना होगा। ठीक है, बेसिकली आपने लाइक एनी अदर पेशेंट आप इसको इस लेवल पे लेके जाके वो इलेक्ट्रोड वगैरह पहले लगा लेंगे ताकि उसमें मिनिमाइज हो टाइम। ठीक है, क्योंकि ये इसके अंदर ये डिबेटेबल, मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये एक ओपन एंडेड इसकी मैनेजमेंट है। इसमें इंटुबेशन करना मैंडेटरी है, नहीं भी है और है भी, या कह लें आपके इसको आप डिपेंड करेगा उस पेशेंट के ऊपर। ठीक है ना, अगर उसका बहुत हैवी एयरवे है और ऐसा एयरवे है कि जो आपको लगता है कि वो उसकी टंग फॉल कर जाएगी और आपको एयरवे को मेंटेन करना मुश्किल होगा, तो आप इंटुबेट कर लें, कोई इंटुबेशन मना नहीं है। वो तो इंटुबेशन इसलिए सिर्फ कहा जाता है कि क्योंकि ये एक बहुत ब्रीफ सा प्रोसीजर है, तो इंटुबेशन करने की जरूरत नहीं होती। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि मेरा ख्याल है कि सबसे, अगर आप प्रैक्टिकल मुझे से पूछते हैं आंसर इसका, तो एल में डालने का एडवांटेज ये है कि आपका एयरवे सिक्योर हो जाएगा पार्टली। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सारा एस्पिरेशन का भी रिस्क है ना। तो आप ये देख लें कि असूलन तो इंटुबेट करना चाहिए, लेकिन आमतौर पे पे अगर रहता है, अगर आप उसको शॉर्ट एक्टिंग देते हैं तो वो इतनी ज्यादा क्लिनिकल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन बहरहाल ये ओपन एंडेड है, ये ज़हन में रखें बात। इसके अंदर कोई भी आंसर गलत नहीं है और कोई भी आंसर सही नहीं है। ये सिनेरियो पे डिपेंड करेगा इस चीज पे ना। डॉक्टर आसमा इसमें ये था कि तो हमारा यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा है, एक हमारा प्राइवेट सेटअप है, वहाँ पर रूटीन में करते हैं ECT और फिर में भी हमें कॉल करते होते थे। तो उसमें हम जो अपने रिजीम यूज कर रहे हैं, बात तो बेसिक वही है जो डॉक्टर निशान ने कर दी कि कोई भी जो रिजीम है या आपका अपना एक प्रोटोकॉल है वो विद योर ऑन एक्सपीरियंस या इंस्टीट्यूशन एक्सपीरियंस पे भी होता है। तो हम यहाँ पे यूँ करते थे कि हम शॉर्ट एक्टिंग एजेंट यूज करते थे और सक्सीनाइल कोलीन देते थे, इंटोबेट नहीं करते थे। और उसमें जो है मास्क के ऊपर ही उसमें जो बेसिक चीज़ होती थी वो हम असेसमेंट ऑफ एयरवे, अगर एयरवे इजी है और उसमें हमें लग रहा है कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड विदाउट इंटुबेशन चले जाते थे और इट्स अ मैटर ऑफ जस्ट फ्यू सेकेंड्स। तो उसके लिए आपने उसको डीप करना है। मसल रिलैक्सेंट देना इसलिए ज़रूरी होता था कि ये जो जब वो देते हैं उसकी जो है ना शॉक का, तो उसमें स्वेयर कंट्रैक्शन होती है और इवन के पेशेंट जो है वो उसके जो टेंडन है वो भी रप्चर होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए इसमें मसल रिलैक्सेंट यूज़ करते हैं। तो हम सक्सीनाइल और प्रोपोफोल और एनाल्जेसिक ज़रूर दीजिएगा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये बड़ा पेनफुल प्रोसीजर होता है और एनाल्जेसिया अगर आपने नहीं दिया हुआ तो पेशेंट को बाद में मस्कुलर पेन और वो बहुत ज़्यादा होती है। तो हम जो यूज़ करते हैं वो जो है नलब्यूफिन, उसके बाद मेटाकोलोन और उसके बाद जो है प्रोपोफोल और सक्सीनाइल, ये 3 ड्रग्स की रिजीम यूज़ करते हैं और इंटुबेशन की 99% हमें तो ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने जितनी भी आज तक करवाए हैं किसी पेशेंट की हमें बाद में ज़रूरत नहीं पड़ी। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो इन हैंड आपने रखनी है, एट्रोपिन को इन हैंड रखिएगा क्योंकि इसमें स्वेयर ब्रेडिकार्डिया होती है और ब्रेडी एरिथमियाज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो ही ब्रेडी में पेशेंट जाए तो आप एट्रोपिन दें। तो ये एक छोटे सी इसमें एक पर्सनल एक्सपीरियंस। डॉक्टर आसमा का क्वेश्चन है सर। जी जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर डॉक्टर अस्मा हियर। सर मैं क्वेश्चन नहीं सर, मैं अपना एक्सपीरियंस सर शेयर करना चाहूंगी कि सर क्योंकि मेरे सेटअप के अंदर ECTs होती हैं और हमें वीकली 2 to 3 टाइम्स जाना पड़ता है। तो सर एक चीज जो मैं बस शेयर करना चाहूंगी अपने कोलीग्स के साथ कि सर हम जैसे सर जो नया पेशेंट आता है ना सर, उसमें मेरी ये कोशिश होती है कि सर एक तो उसकी पूरी वाइटल मॉनिटरिंग कर लूं और सर इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस सर मैं जरूर चेक करती हूँ, जैसे CP लेवल्स, RFTs लेवल्स और सर सीरम पोटेशियम लेवल्स। क्योंकि सर मोस्टली हमारी भी रिजीम यही है कि हम डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट सक्सामेथोनियम और प्रोपोफोल यूज कर रहे होते हैं। तो सर इनडायरेक्टली यानी कि मुझे ये चेक, मेरा ये प्लान होता है कि मैं देखूं कि कहीं एरिथमियाज ना कॉज हो जाए हाइपर कैलीमिया होने की वजह से। तो सर इसमें जो एक चीज मैंडेटरी मेरे ख्याल से कि सर RFTs और सीरम पोटेशियम लेवल्स मस्ट है। और सर बाकी तो सर इसी तरह हम कंटिन्यू करते हैं, मॉनिटरिंग लगाते हैं, सारी ऐसे स्टैंडर्ड मॉनिटरिंग होती है सर। इमरजेंसी ड्रग्स प्रिपेयर करें जिसमें हम एट्रोपिन हमारा रेडी होता है इन हैंड, और सर हम पहले प्री ऑक्सीजनेट करते हैं। हम साइकेट्रिस्ट को सर उसको रेडी करती हूँ कि भाई आप लोग बिल्कुल मेरी बेड साइड पे खड़े हो तो मैं तब एनेस्थीसिया दूंगी। उसमें IV लाइन सर मैं 2 पास करवाती हूँ ताकि अगर एक फेल हो तो दूसरी में हमें चांस मिल जाए। कॉन्सेंट सर हम चेक करते हैं, इसके अंदर अटेंडेंट्स का कॉन्सेंट चेक करते हैं
और उसके बाद सर सबसे पहले हम प्रोपोफॉल देते हैं, फिर सक्सामिथोनियम देते हैं और नॉर्मल आईवी जैसे नॉर्मल सलाइन का एक पुश देते हैं। उसके मीनवाइल वो अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट हम लोग डोज एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं। पेशेंट जैसे सेडेट होता है सर हम फौरन एयरवे रखते हैं और सर मास्क रिमूव करते हैं और मीनवाइल वो दोनों साइड्स पे इलेक्ट्रोड्स लगा के सीजर देते हैं जितनी देर का उनका होता है। जैसे ही वो उसकी ड्यूरेशन खत्म होती है सर तकरीबन हमें 1 मिनट तक एक काउंट करते हैं कि कितनी उसकी कंट्रैक्शंस आ रही हैं और जैसे ही वो खत्म होता है और सर फिर मैं दोबारा रीऑक्सीजनेट करते हैं। इसमें सर जैसे ही हम लोग सीजर होता है तो सर पेशेंट पहले टैकी में जाता है और फिर ब्रेडी में आता है। तो वो हमने देखना होता है। सर जो 20 पेशेंट्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा हमें डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि अक्सर सैचुरेशन 50 टू 60% पे ड्रॉप कर जाती है। तो उसके अंदर जो है ना बहुत अच्छा बैग मास्क वेंटिलेशन, इसके अलावा एम्बू बैग, वेन सर्किट सब कुछ हमने इन हैंड रखा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम को कैरी कर लेते हैं। सर बस ये एक एक्सपीरियंस मुझे शेयर करना था जो हम रूटीन बेसिस पे कर रहे हैं अपने कुली सर जिनके पास ये फैसिलिटी नहीं है। थैंक यू सर। जी थैंक यू। Yes, madam. Very helpful. Thank you. जी किसी और का क्वेश्चन? आमिर इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी करें तारक भाई, करें बात। अच्छा आमिर, जैसे आप लोग आप सारे एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, इसके अंदर जो सबसे बड़ा इशू होता है, आप लोगों ने क्लास में पढ़ाया था तो तनवीर ने बताया था कि, और ये मेरा जाती एक्सपीरियंस भी है कि जब भी ये वाले पेशेंट आते हैं, और जो मैं थोड़ा सा सवाल से समझा हूं कि शायद वो समझ रहा था कि पहले सेडेट करके लाएंगे या विदाउट सेडेशन लाएंगे, तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो पेशेंट कॉपरेशन इज द मेजर चैलेंज ड्यूरिंग द ईसीटी प्रोसीजर, कि पेशेंट आपके साथ कॉपरेट नहीं कर रहा होता। तो अगर पेशेंट कॉपरेट नहीं कर रहा, आप अटेंडेंट से कंसल्ट लेंगे, और सेकंड जब भी आउट ऑफ ऑपरेशन थिएटर कर रहे हैं तो आपने सेम प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं, पूरी प्री एनेस्थीसिया असेसमेंट करनी है, उसकी इसकी इंडिकेशंस हैं, देन कंट्रा इंडिकेशंस हैं। तो कंट्रा इंडिकेशंस आपके जहन में लाजमी होनी चाहिए, जिस तरह लंग बोन फ्रैक्चर का बताया, जिस तरह मतलब इंट्राकुलर प्रेशर रेज होता है, आईसीपी रेज होता है इसके अंदर, सेम अगर पहले से पेशेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, विद इन 1 मंथ एमआई हुआ है, तो दीज आर कंट्रा इंडिकेशंस। थर्ड, इसके अंदर ड्रग आपने लाजमी कंसिडर करनी है, जिस तरह पेशेंट मोनोमाइज इनहिबिटर्स ले रहा है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक रिस्पांस एग्जैजरेटेड आ सकता है। थर्ड, जिस तरह आपने एट्रोपिन लेना है उस तरह एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स भी आपकी तैयार होनी चाहिए टू को विद द सिंपैथेटिक रिस्पांस। और सबसे जो जरूरी चीज है वो शायद आपको याद होगा जब आपने क्लास ली थी पैरा ये ईसीटी के ऊपर, तो उसके अंदर उसने यही कहा था कि इन पेशेंट्स के साथ हमें बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक होना पड़ता है। ये बहुत ज्यादा बड़ा चैलेंज होता है कि पेशेंट पहले ही डिप्रेशन में होते हैं, आपके साथ कॉपरेट नहीं कर रहे होते हैं, तो जब पेशेंट आपके साथ कॉपरेट नहीं कर रहा, आपने आईवी लाइन लगानी है, तो फिर सेडेशन मैंडेटरी है, पहले सेडेशन दे के फिर आप पेशेंट को सेडेटेड हालत में ईसीटी रूम में शिफ्ट करेंगे। चलें इसके साथ ही यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। हमारा आज का टाइम 15 मिनट हम ओवर शूट किया है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम विद इन आवर ही चलें ताकि सबको सूटेबल रहे। So with today's discussion, we'll see you on next Wednesday. And next Wednesday topic is regional anesthesia. Imran? जी सर, न्यूरोएक्सियल सर। न्यूरोएक्सियल। ठीक है, इस पे आपकी प्रेजेंटेशन है इमरान? नहीं सर, डॉक्टर हसीब सर। ओके, डॉक्टर हसीब की है। मैं सर रीजनल पे दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, उसके अलावा जो है हमारे ये काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट माशाल्लाह हैं, 26 अभी हैं इधर। तो नेक्स्ट हम शेड्यूल जो है वो रीजनल एनेस्थीसिया का लेके चल रहे हैं, तो उसमें कोई प्रेजेंटेशन देना चाहे तो वो वॉलंटरली जो है वो मुझे या इमरान या डॉक्टर असलान कुरैशी हैं। यस सर। सर मैं अल्फाबेटिकली करता हूँ, जो वॉलंटरी करेगा दैट इज गुड, अदरवाइज मैं हमारे वो अल्फाबेटिकली। जो गूगल क्लासरूम वाला है उसमें, उस ग्रुप में तो लोग हैं, उसमें एडिशनली कुछ और लोग आना चाहें तो वो भी बता दें, उनको उस ग्रुप में ले लेंगे। बाकी जो है हसीब का है नेक्स्ट, तो उसके फिर अल्फाबेटिकली चलता रहेगा। तो थैंक यू सो मच। इसके साथ ही क्लास हम यहाँ एंड करते हैं, तो अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर।